हैंगओवर निंजा भाई। वीसी 1 मिनट मुझे कुछ चेक करना है, अगर वो ठीक चंगा तो ठीक, वरना वीसी में नहीं आऊँगा मैं। मुझको कुछ चेक करना है, मेरा नेट वैसे स्मूथ चंगा है तो मुझे देखना पड़ेगा। निंजा भाई ये जंक्शन के अंदर ये इशू है, देखो। What's the hurry? I guess I'll post the commission at the adventure. ऐसा नहीं देखो। Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. It's been getting quite busy, guys. Everyone can hear your voice. Come take a look. There will definitely be something that catches your eye. Haven't you heard? There's a strange wanderer near Wolfenham. Which should I choose? नहीं निंजा भाई, वीसी में नहीं आऊँगा यार, मेरा नेट स्मूथ चंगा है। और दूसरी बात, इसमें वीसी में आते में पिंग हाई हो जाता है जंक्शन में, तुम्हें तो पता है 300 350 हो जाता है। अभी 160 चंगा है। Dodge this.
justice. Oh, so. Out of the frying pan, into the... Over here! No, my sword! Dodge this! Drag it, frostbite! Time to act. Body and mind. Add as. Thank you for. Add as. Add as. Time to act. Body and mind. Has the most prosperous commercial No. Now this. That's what I call a moment of solitude. Oh, Paimon almost forgot! Didn't Zhongli say who We didn't have anything else to do today, right? Why don't we go have a look around? Maybe we'll run into her.
she could float around all day and never get tired. Cream! Gummies! Fuel fruit! Huh? Did you hear that? Sunshine! Blue skies! Good vibes! Right? So Paimon wasn't just hearing things. That voice sounds really familiar. Well, we've got the time. Why don't we go check it out? What are they doing here? Navia, Clarande! Well, if it isn't my dear partners. See, I told you that something good was going to happen during our travels today. I have to say, sometimes the Steambird's astrology column is spot on. It's just your lucky day. Are you guys also here to catch the festivities? Oh, and that reminds me. Happy Lantern Ride. Happy Lantern Rite. Happy Lantern Ride to you too! Wait, if you're here for Lantern Ride, then what are you doing on top of this deserted mountain? And that voice we heard, that was you, right, Navia? Oh, impressive. You could tell it was me from that far away. You've got good ears. That or your voice is just really loud. Well, of course it is. After all, I'm a boss. Indeed. I suppose it's an asset. Sure is! Having a loud voice is a handy tool when it comes to communication. Wait. That wasn't even Paimon's point. Paimon just wants to know why you two were shouting from the top of this deserted mountain. There was something about almonds, maybe? And buell fruit? Ooh, is it some sort of secret code? No, it's not a code. The words are meaningless. Perhaps, but the act of shouting was very meaningful indeed. That's just what mountain climbers do, right? After all the hard work it takes to make it to the top, as you stand on the summit looking out at the vast scenery, it's not easy to resist the urge to release those emotions. Exactly. You get me, partner. I was afraid that it would cause a disturbance, so I asked the locals around here, and they said it was fine. Apparently most hikers like to shout when they get to the top, so the locals are used to it by now. So, you see, it's not just me. I guess everyone shouts from the top of a mountain at some point in their life. Speak for yourself. When you're stressed, don't you ever just get the urge to do something for no reason? Not really. If I ever get stressed, I just go hunting. Oh, that's a pretty good way to relieve stress. What I choose to hunt depends on my mood. Huh? Anyway, why don't you two give it a try? Shout anything you want. It's a real stress reliever. As long as Paimon has clothes on her back and food in her belly, Paimon doesn't think there's any stress that needs relieving. Oh, I bet you guys are just too embarrassed to let loose. No need to be shy. Even Farina was shouting from the top of this mountain earlier. Huh? Did Paimon hear that right? Farina's also here? In Chaoyang Village? Believe in your ears. It is indeed as you heard. Actually, the reason we climbed this mountain in the first place was also because we heard the sound of shouting. Yes, we could just about make out someone yelling things like, "Help me!" and "What should I do?" So we hurried up here to check it out. And what do you know? Miss Farina was standing right there, all red in the face. She practically sprinted back down the mountain the minute she saw us. Ah, that reminds me. I believe what she actually said was, "So help me, I will figure out what I should do about this script." So, you could actually hear what she was saying? Why didn't you say so earlier? I thought someone was really in trouble. I figured we would come check out the situation either way. Why not let her keep some privacy? Oh,
seems like you caught Farina in the middle of some stress relief as well. She probably would have never thought... No, she definitely would have never thought she would run into anyone she knew all the way out here. I think so. We ran into Nervalette on the way here as well, but he was already on his way back, so they probably weren't together. What? Nervalette was here too? What was he doing here? It couldn't have been for vacation. I think it just might have been, actually. But apparently he only stayed for half a day before heading back. He's a very busy man. Neuvillette is not the type to take much time off. Taking even a half day for himself is already a huge step in the right direction. Didn't Charlotte publish an article on the Liyue tea industry recently? Maybe he was inspired to come buy some tea after reading that article. You know, just like you were. My situation is completely different. I'm here because I was asked to accompany you. The tea purchase is simply an added bonus of this location. You Fontanians and your tea drinking. Oh, it's not for me. I lost a bet with Ridesley, and now I have to buy him something. It was just a spur-of-the-moment sort of bet. Ridesley gets really invested in that sort of thing. But he couldn't care less about what he wins in the end. You could give him mint plants that you plucked from the side of the road, and he wouldn't even mind. If only he was that easygoing when it came to talking business. In any case, I'm pretty sure the tea you bought is this region's specialty. What is it called again? Yes, that's the one. You didn't really buy 10 boxes, did you? Please, do I look like someone who would fall for that sort of marketing trap? That reminds me. You guys said you only came up here because you heard my voice, right? I hope it didn't put you out. You must have had other plans for the day. Oh, that's right. Who tell? A few days ago, we heard that a friend was going to be in Qiaoying Village, so we decided to come and see if we could run into her. Oh dear. We've been chatting for quite some time. I'm sorry for keeping you. That's good. We should probably head out and look for Hu Tao. No need to stay on our account. We just got up here, so we're gonna stay around for a little longer. Go and meet your friend. We can meet up in Qiaoying Village later. Sounds good. We're gonna head down the mountain then. See you later! Qiaoying Village is known for its tea, but you know what else they have with tea? That's right, dim sum! Didn't Gaming say something about dim sum being eaten in the morning? Oh, Paimon wonders if we can still get some at this time of day. Oh, well that's fine too. Paimon doesn't care what kind of tea it is as long as it comes with some tasty snacks. Now, let's see what kind of yummy things we can find around here. Paimon's not seeing things, is she? Is that Farina standing between Zhongli and Hu Tao? Wonder what they're talking about. Zhongli knows a lot of stuff. Maybe he's telling Farina about Qiaoying Village. Oh, or maybe Hu Tao is trying to rope Farina into being one of her clients. Hey, this isn't the Fortress of Meropide. But Paimon could be convinced for the right price. Let's say, loser buys the winner 3 huge bowls of seafood kanji. Since Zhongli is there, Paimon bets things are pretty tame. It's decided then. Paimon votes for tour guide Zhongli. Alright, no time to waste. Let's go see who's right.
Oh, great. Now Paimon's shouting too. Oh, well, aren't you a sight for sore eyes? Seems like our luck just keeps on growing. That we were able to meet you both without prior arrangement must mean that this is quite the serendipitous meeting indeed. Huh? Oh, so both of you are acquainted with the Traveler and Paimon then? I'm pretty sure you didn't learn that one from me. I must admit, I am a bit surprised to see you here, Traveler. But seeing as you're a hero who's been all over to that, it makes sense that you would be well-traveled and well-connected. Since we have found ourselves in each other's company within this fertile land, allow me to take this opportunity to wish you a happy Lantern Rite. It appears you have been to Fontaine, then. Given your proclivity to spread good deeds wherever you go, it's no surprise that you would make the acquaintance of a celebrity as illustrious and celebrated as Miss Farina. That's quite high praise. What I mean to say is, you flatter me, Mr. Zhongli. Although I've built up a certain following within Fontaine, it is no reflection of strength or wisdom. I stand before you right now as nothing more than an ordinary traveler in search of beautiful scenery and creative inspiration. There is definitely more to Mr. Zhongli than meets the eye. I could tell as much from our conversation earlier. Given his breadth of knowledge on both academic and worldly matters, there's no way he hasn't heard about what happened in Fontaine. Is he just feigning ignorance for my benefit? No. You're no common tourist. I simply won't have you talk about yourself that way. Huh? Does that mean Hu Tao also knows? You may not have heard, friends, but... Miss Hu Tao. Miss Farina is now one of my esteemed clients. Okay, you win. Guess Paimon will have to break into the hidden stash at the bottom of her shoe. Huh? What's this about winning something? Don't tell me. You two were placing bets on us. We just saw you guys standing on the side of the road and couldn't help but take guesses as to what you were talking about. Oh, I see. That means you, my friend, must have guessed that I was trying to promote my business to Miss Farina. That I do, my friend. What was Paimon's guess then? Paimon thought Zhongli was showing the newbie around. By newbie, you mean me, right? If that's the case, then Paimon's guess was also correct. Oh, that's right. Mr. Zhongli was telling me about some great sightseeing spots in the area. Ha! You see? Paimon was right too! Since both of our guesses were right, there can't be a winner or a loser. Hey, don't be upset, Traveler. How about this? You buy Paimon a bowl and Paimon will also buy you a bowl. As for the third bowl... Since I was the subject of the bet, perhaps it should go to me? You know, as a congratulations for the huge deal I just struck. I was just joking. Anyway, I should be the one treating you. The funeral parlor is about to bring in quite the sum after all. Oh, Paimon almost forgot to ask about the most important question. Something happen recently, Farina? Huh? What do you mean? Well, you know, with you enlisting the services of Wangsheng Funeral Parlor and all. Oh, well, yes. Really? Oh no. Paimon is so sorry for your loss. Although Paimon may have not known the person, please accept Paimon's deepest... Whoa, it's not like that, Paimon. Huh? But Paimon just thought, since you hired the services of a funeral parlor and all... Hey, it's not that big of a stretch.
Really, Paimon, it's not like you don't know me. Do I look like I know anyone who would ask me to coordinate their funeral? Miss Hu Tao is simply helping prepare some props for my film. Not too long ago, I read a collection of horror stories from Liyue. The content was spectacular. In fact, I still feel the need to sleep with the light on even now. Anyway, that's not the point. Now that Fontaine's biggest star has returned to the stage, I figured it's about time the industry enjoyed a breath of fresh air. Hey, that's pretty good. I'll have to remember that for my ad posters. Oh, Paimon sees. That makes a lot of sense. So, did you come to Liyue just to enlist the services of Longsheng Funeral Parlor? Well, not exactly. My original plan was to just relax and enjoy the sights. But then I ran into Miss Hu Tao and Mr. Zhongli, and well, you know the rest. I suppose it was meant to be. It was a fated meeting indeed. Zhongli sure loves his lofty turns of phrase. But if you ask me, it's all thanks to that man who stopped to ask for directions. Oh? Who was it? It's someone you know. Wanna take a guess? What? How did you guess that on your first try? Very impressive, my friend. Your guessing game is spot on today. Huh. Paimon never thought Neuvillette would be the type to get lost. I'm sure he didn't get lost. Even I was able to find my way to this place without any trouble. He was already getting ready to leave by the time I arrived. He just wanted to ask someone about the quickest way to get back to Fontaine. Yup, that's exactly what he asked. This area is full of mountains and rivers. It's normal to not know the fastest route. So, were you the one that pointed him in the right direction, Hu Tao? Of course. I'm also a guide of sorts, you know. So नो naturally, I कम टू also वीसी have जो a कि great भाई sense of वीसी नहीं direction. आ पाऊंगा यार मेरा ना यही But दिक्कत आ गया पिंग इशू हो जाएगा being मेरा with your और friend, मेरा आज नेट नहीं सही चल रहा है तभी तो मैं कल स्ट्रीम नहीं कर पाया he doesn't get out much, does he? Ah, no wonder. He was stiff as a board and way too polite. I would have never guessed he was here on vacation if you hadn't told me. All in all, he was only here for half a day. हैंगओवर I'm निक pretty गेमर sure भाई he's कैसे हो the only one who अरे would मैं भाई के consider सामने that to शादी be a है तो पता है vacation. इसलिए माइक ऑफ रखा हूँ Oh. बहुत शो हो गया वहाँ पे This gentleman you speak of must keep a demanding schedule. I'm sure he does. You didn't see him, but he was dressed like he was about to attend some important meeting. It wasn't anything like what someone would wear on vacation. Is that so? Wait, you didn't see him, Zhongli? Unfortunately, no. At the time, it appeared as if Director Hu and Miss Farina were having quite the productive conversation. I know matters of business can Use take much different discussion, mobile. so I decided to मुझे fetch download some करना tea पड़ेगा for them. What a shame. गेम छो That gentleman seemed like a मजा मा ब्रो sophisticated sort of guy. તમે કેમ છો I નિક actually ગેમર think ભાઈ you two would have hit it off. Is that उधर भी शादी so? अपन गया नहीं मैं तो घर के सामने शादी है मैं जाऊँ ना जाऊँ उससे क्या फर्क पड़ता है सेकंड फोन में डाउनलोड करना पड़ेगा यार 10 पूरा झंझट रहेगा ऊपर से मेरा जिस पे ओटीपी आएगा वो फोन भी मेरे पास नहीं है To ये borrow Miss ओटीपी भी दूसरे Farina's फोन turn पे of आता है वो phrase, फोन perhaps मतलब it just wasn't दूसरा meant to टेक्निक be. बनाना पड़ेगा ना उसके अंदर वो जिस पे ओटीपी आएगा वो Well, दूसरे with the पे traveler around, I'm sure you'll have a chance to get to know each other at some point. That's right. She's got more friends than she knows what to do with. Well, that's certainly true. Oh, that reminds me. If you get the chance, you should try and talk to Neuvillette into loosening up a bit. Just tell him the Palais Mermonia isn't going to fall apart if he disappears for a few days. He shouldn't keep himself cooped up all the time. Even clams ठीक है open their भाई shells बहन to के let in fresh साथ water every रश्मि once in a while, right? की
If कि he's होने की really थोड़ा that थप्पड़ much of a पड़ते ही stickler for protocol, भाई यही होता है he भाई can देखो fill out a leave तुम of absence एक हिट मार request. दोगे आई मीन तुम He'd, एक बार have to मार approve दोगे it ना उन्हें herself, कुछ तो since वो he handles that sort of thing now. घर But के you know what I सारे mean. बर्तन फेंकेगी और कहेगी तुमने उसको उन सारे बर्तनों पे फेंका था इस वजह से बर्तन गिरे। मेरा मतलब ये है कि तुमने एक थप्पड़ मार ना वो ये बताएगी क्या कहते हैं अपने मम्मी पापा से कि तुमने उसे सीढ़ियों से घसीटते हुए नीचे नहीं गए फिर घसीटते हुए ऊपर गए और फिर तुमने उसको मारा। Hey, sounds like a pretty uptight बच के sort भाई of guy, बेस्ट ऑफ all लक। right. In my experience, a leader needs to be able to roll with the punches. That also includes knowing when and what to prioritize. It seems like your friend still has a lot of growing to do. If I remember correctly, he's already several thousands of years old. You're quite right, Miss Hu Tao. Oh? हम लड़के ना भाई Traveler, ऐसे ही होता है हमारे Miss साथ ये तो Farina. है भाई निक्के में Those भाई two क्या कर सकते individuals over there appear to recognize you. Oh, it's Navia and Clorand. Hey, over here! हैं। I mean कोई ना बड़े We saw you all chatting over here, and we're wondering if we कोई could ना join बदगा कहेंगे in. हम भी। अच्छा तुम्हें शादी के बाद आगे कि नहीं आएगी excuse मुझे the ये बताओ। interruption. Oh, so polite. बी केयरफुल भाई। No apologies necessary. Any friend of the traveler and Miss Farina is a friend of mine. Ah, straight to the point. I like it. इस बार घंटन का आईटी इंटरेस्टिंग है भाई इंटरेस्टिंग तो है भाई आई मीन एनिमेशन जो कट आते हैं ना उसमें वो अच्छे हैं भाई बहुत तगड़े हैं इन्होंने भाई इस बार का होंकाई की आइकॉन क्वेस्ट कितनी तगड़ी थी भाई अगर जिन्होंने होंकाई नहीं खेला है ना तुमको पता नहीं है बट आइकॉन क्वेस्ट बहुत तगड़ा है भाई इस बार का। मैं उसका सेकंड फेज का वेट कर रहा हूँ कि मतलब सेकंड फेज के हो 2.0 चंगा है ना 2.1 का वेट करो कि 2.1 आए उसका नया क्वेस्ट आया आइकॉन क्वेस्ट आई एम वेटिंग भाई बहुत तगड़ा आइकॉन क्वेस्ट है मैं इम्प्रेस हो चुका हूँ इतना तगड़ा आइकॉन क्वेस्ट है। शादी की आवाज़ नहीं आ रही है शायद नॉइस कंसंट्रेशन की वजह से पर मैं कहूँगा भाई अगर तुमने It's नहीं getting ट्राई late. किया है तो ट्राई करो भाई If we want होंकाई to का catch a आइकॉन boat back क्वेस्ट before भाई dark, इस we बार should का probably बहुत get तगड़ा है going. सीरियसली Indeed. Then, स्टार गेम Miss की बात Farina. करो होंकाई इम्पैक्ट की नहीं। Oh, yes? when are you planning to head back? Do you need us to escort you? मैं फोड़ रहा था फोन मैं I खेल रहा था don't फोन think ने that दम will be तोड़ दिया। necessary. हाँ भाई I mean, you're not my फोन की ऑक्सीजन subordinate जब सप्लाई anymore. खत्म होगी You don't भाई need to look after me. बता I didn't जेंशिन mean it that होंकाई way. फोन में It's एक ही फोन normal में for रखना बहुत बड़ी बात होती है Friends to travel home together if they run into each other on the बहुत road. ज्यादा दुख होता है जब There are a अंडरस्टैंड होता lot है of मैं mountainous तो roads इसमें in खेल this पाता हूँ area. क्योंकि मैं इस फोन में I व्हाट्सएप imagine they'll be इंस्टाग्राम even और harder to navigate इसके after सिवा कुछ dark. है नहीं मैं बाकी सारा Exactly. Just like in चीज those दूसरे फोन में ghost रहता वरना तो मैं stories. फोन में मैं दोनों गेम नहीं खेल पाता। 8 paths converge in a wood. Beside them an old house is stood. If Try you कहूँगा dare फिर से। to go inside, हाँ कह के देखो not a soul will greet your eye. But if you take a closer look, there may be something you mistook. A candle flickers to and fro, yet there is no wind to make it so. उठाओ डराना चाहती क्या What हुई is ना को its secret? What could it mean? In this wood, where mystery. और डरा भी दिया शूट My dear demoiselles, ladies, no, I mean friends, please take me with you. Of course. भाई उसको डरा दिया। स्टैचू चाहिए मुझको स्टैचू कौन सा स्टैचू वो Gotta say, Farina, you are really quite the character. By the way, did I hear you mention that Clorand used to work under you? Then you must have also been a leader at some point. Well, that's, all in the past now. Besides, being a leader is hard. It wasn't the right job for me. I prefer how things are now. I can come and go as I please, and get to enjoy the sweet taste of freedom. I see. Food, Well, इन्होंने you've earn किया certainly वो picked an freedom भाई। apt place to relax. Chaoying Village is an exemplary choice. Only the best.
And I've learned a lot too. इस बार नहीं मिंगना Thank you डेकोरेशन so कर मिंग much, तो है Mr. डेकोरेशन Tao and Mr. Zhongli. It's fine. मैं You गेम thanked us को more खेल than नहीं पाया था enough ठीक से हाँ already. डेकोरेशन के लिए है The कुछ next time you're in this neck एक of तो the जोंगनी का woods, स्टैचू है I'll treat you to some dim sum in the जो city. कि किसी टाइप के अवार्ड जैसा फील Dim होता है sum. Is that some And- kind of Liyue term for snacks or desserts? छोटे They छोटे और are कुछ a भी part हैं। of it. It's basically a table full of as much tea, sweets, and good company as you can manage. Oh, so it's basically a tea party. Sounds सही है great. सर एंजॉय सर Make sure to Oh, order the बताओ। winter melon cake तुम्हारे and the कोंगे lotus नाइफ कैसे flower चंगी है crisp. ये बताओ बाकी चीजें छोड़ो Delicious Paimon knows you'll love them. Ooh, okay. I'll be looking forward to it then. Wait, but didn't you guys say you were here on vacation? How come you're all going home वो लोगों तो empty-handed? म्यूजियम के ओपनिंग के लिए मिला था हाँ उसी की बात कर रहा था मैं Of course नहीं एक और I है am. मतलब I वो bought है tons टी of पॉट fun की things है to मेरे bring को home उसका with पता me. नहीं क्या है A kite, a न्यू टी पॉट भी अपना parasol, a डेकोर करना little पड़ेगा tin तुम्हारे पास frog न्यू that टी पॉट jumps. का वो आ गया है Oh, and- ओके भाई मेरी वाईफाई गया भाई वो तो एक मिनट भाई मेरा वाईफाई गया एक सेकंड रुको यार मैं वाईफाई ठीक करके आता हूँ वेट We saw you all chatting over here, and we're wondering if we could join in. Oh? Traveler, Miss Farina. Those two individuals over there appear to recognize you. Oh, it's Navia and Clorand. मैं तो मैसेज स्ट्रीम सब उठ गया था अभी भाई मैं बताऊँ ये इतनी शिटी चीज है ना इसके अंदर होंकाई स्टार गेम में ये ऑप्शन है कि तुम स्किप कर We सकते हो saw जो भी you तुमने all पुराना chatting over here, and we're अभी wondering तक if we तुमने could join in. जितना भी प्रोग्रेस किया था वो तुम स्किप कर सकते हो अगर तुम्हारा कहीं से गेम Excuse क्रैश the हुई है कुछ interruption. भी इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया भाई No apologies. जब तुम never. होंकाई में ले सकते हो तो इसमें क्यों नहीं भाई ये रिपीटिव जो होता है ना मुझे बहुत बेकार लगता है भाई ये सीरियसली कितना बेकार लगता है यार It's एक ही getting चीज late. वापस से देखना If we want to catch a boat back before dark, we should probably. Indeed. Then होंकाई स्टार गेम में भाई इसके बाद गेम आई है आई मीन उसके डेवलपर normal डिफरेंट है for क्या भाई बहुत ज्यादा बेटर है भाई वो अगर to देखा travel जाए home तो together if they run into each other on the road. Take a closer look. There may be something. Certainly. Only the See best. Thank you. you. It's fun. The मैं next वाईफाई time. Of course I am. I bought tons of fun things to bring home with me. A kite, a parasol, a little tin frog that jumps. Oh, and a stuffed toy of a mythical beast. Clorand is the one who didn't buy anything for herself. So, all बहुत you... And डम some लगता है भाई सीरियसली Well, one of मेरे पास अगर कोई सेकंड ऑप्शन होता है ना मैं Me? चेंज कर देता Oh, well, वापस I bought मेरा some tea, कोंगे of नाइफ course. के बारे I just में had to पूछते try all the एक varieties सेकंड मेरे को यहाँ से recommended पढ़ना in the पड़ेगा चाहे तो वो steamer. बहुत दूर दिया मैंने फोन Other than that, मेरे just को some कोंगे नाइफ bits के बारे and में पूछा bobs, था you तो know. भाई A मेरा little bit तो of this, हेल्थ इशू little bit of हाँ वो मुझे that. पता है तुम्हारा एक्सीडेंट They तो हो should all गया be था वो things I ये can वाला तो मुझे बात use. पता है मुझे लगा तुमने I एग्जाम्स think- मतलब कांग्रेस ने थोड़ा सा सपोर्ट किया होगा कि हाँ एक्सीडेंट की वजह से हुआ है तो वो तुम्हें एक तरह से कह सकते हैं कि जैसा हमारे वो नहीं होते कंपार्टमेंट के पेपर होते वैसा कुछ किया होगा उन्होंने मुझे नहीं पता था तुम्हें स्टार्टिंग में Oh, Monsieur Neuvillette took them with him. The imagination you've got there, Paimon. Monsieur Nervillette just saw the amount of bags we had and offered to take them back for us. I felt even Clorand was happy to take him up on his offer. If even his trusty subordinate agreed, then who was I to refuse? What?
Right as I thought. If only the funeral parlor had an employee as thoughtful, proactive, and responsible as him. Right, Zhongli? नहीं भाई Indeed. कोंगे जो गधे थे भाई कोंगे जो गधे होते हैं भाई Clorette said Nervalet offered. We don't know exactly when he'll show up. Moonlit night, that the hero approached the vile dragon's limpid lair. ओहो कहाँ जाना है आई एम इरिटेटेड भाई बता 850 रुपीज मंथली पे करके भी मुझे नहीं कर पा रहा मैं कुछ भाई अब क्या कर सकते हैं टेक प्रॉपर केयर और यार मूवमेंट के पास जाना है मुझे यार ये कहाँ पे कैसे जाऊंगा मैंने फाउंटेन अनलॉक नहीं किया हुआ है यहाँ से जाना पड़ेगा फांग तो मैं एक साथ गया भाई क्या कर सकते देखो भाई नाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट भाई तुम चाह के भी कुछ और नहीं कर सकते Body and mind. Time to act. भाई मैं एक बात पूछूं मैं नाम नहीं लूंगा यूज करते हैं बहुत ज्यादा ही डीप आई मीन वहाँ की भाषा में करते हैं बट क्या है सामने वो रहते तो थोड़े बहुत समझ आता है मुझे भी वो अब्यूज कुछ ज्यादा ही डीप है डीप से तुम समझ रहे हो बहुत ज्यादा डीप अब्यूज है भाई वो हमारी तरह नहीं है इन्होंने पता नहीं डालना चाहिए था थोड़ा कष्ट तो दो अपने को Since I was able to conclude my work early for the day, I thought I might take a walk and avail myself of this area's peace and quiet. You call this early? भाई बहुत अजीब अब्यूज करते हैं भाई I mean Strictly speaking, that depends on the agenda for the day. I am hardly bereft of भाई time. मेरा however, सर घूम गया मैं so working एक मिनट late is स्पीड of क्या little एक मिनट स्पीड consequence to टेस्ट me. करने दो Really? If you have so much time on your hands, then why did you मैं only भी go to speed ही test कर रहा था भाई, Village मैं- for half a day? सीरियसली भाई मैं सर घूम गया भाई इन्होंने इरिटेट किया हुआ First, मुझे I should clarify that I was referring to my lifespan, rather than the time at my disposal on any given day. Second, I was unaware you possessed no. भाई ये बहुत कम देगा यार स्पीड भाई आई मीन मेरी जो 300 mbps पे ये 100 mbps देगा भाई 300 mbps के पैक पे भाई मैं वो तुम्हें नहीं कहा मैं कह ये शादियों में ना अब्यूज बहुत करते हैं भाई लोग आई मीन पता है कैसे कैसे अब्यूज है बहुत Yes, मैं they have बोल नहीं been सकता यार safely मेरे delivered. को एक पहली बात तो मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैं बैठा हूँ यहाँ पे घर पे I have to hand it to Clorette. Just क्योंकि a मैं simple कहूँगा gift तो delivery, and she has the great and mighty Udex at her beck and call. कह नहीं सकता I घर पे हूँ was मैं just passing through. It was merely an act of convenience. All right. Then I hereby Operator बदल दो confirm भाई। receipt of the goods on behalf of the staff of the कैसे Fortress of बदल Meripede. यही तो दिक्कत है नहीं है ना पता है मेरे इस एरिया में वाईफाई वाला verbal था ही नहीं एक receipt मतलब of वो बंदा है confirmation? जिसने गाया फर्स्ट टाइम Is किसी such a formality वाईफाई really सर्विस स्टार्ट necessary की for a small matter such as this? पता है क्या Guess क्या है not. देखो मैं बता दूं जैसे शादी है ठीक है This शादी quantity हो of के tea, जिसके though, पास जा रहे seems a जिसके little घर में जा excessive for a उसको कह रहे gift, don't you think? कि Before you अगर know वो it, they'll परेशान start करे accusing me of taking bribes. अगर वो बंदा परेशान करे तो About that. उसकी Much of that is my own excess, I'm afraid. ये वर्ड है देखो ये यूज करना Why? What happened? उनकी भाषा में It was buy 10 boxes, get half off. Ah, that explains it then. सोच समझ सकते हो क्या कह रहे हैं। Well, go ahead and leave them to me. I'll get through this stash मैंने as राउटर fast तक as I चेंज can. करवा दिया भाई अब क्या कर सकते हैं You have my thanks. Oh, there's something else I'd like to give to you. This स्टार्टिंग में is नहीं होता था ये पता नहीं
फोन Well, that is सेंटर an पे जो apt रहते हैं इनके, description. It वो is भी in बेकार है भाई। actuality उनको a फोन कर तो वो legal फोन नहीं codex. उठाते भाई। Before the advent of मुझे क्या modern कह रहे writing हैं, utensils, वाईफाई information वांगे was मुझे क्या कह रहे हैं recorded पता on है, stone एग्जाइटम वांगे slabs मुझे such क्या as कह रहे this. हैं, The law was no उनके जो different. कस्टमर मैं देख Since सकती हूँ ancient कि times, the 3 scales डिवाइसेस of कनेक्ट justice है। have symbolized the मैंने fairness कहा हाँ, and तीनों मेरे सामने impartiality पड़े of हैं। judiciousness. आई मीन 2 मेरे फोन है, एक As a स्मार्ट टीवी है, tribute to तीनों that मेरे सामने sentiment, है। this कि slate was सर designed एक after काम a करिए, आपने traditional उसे legal engraved with a मैंने कहा symbol यार instead स्मार्ट of टीवी तो text. मैम पोज पे पड़ा हुआ है, फोन की वजह से मैं During आपसे my बात trip, कर we दिया, joked with Floran some अपने time ago फोन से about मैंने gifting you a डिस्कनेक्ट कर दिया legal जिससे मैं codex. बात कर रहा हूँ। मैंने स्पीड टेस्ट किया, सेम आ रहा कि नहीं, इससे मत चेक करो, जो आप जिससे बात है उससे चेक करो। मैंने कहा मैम so ये that's 5G what फोन this है, वो is 4G फोन है, इसमें और कम आ गए I did तो not expect 4G you में और to कम हो remember it गया। as well. In any case, I hope this can be considered as a reasonable attempt to कह रहे हम यहाँ से join in रिबूट on कर the देंगे, आपका banter. ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कर दो, रिबूट ही कर दो, कुछ तो करो। It is a very रिबूट around कर the दे law. तो यही कर। अब बताए It's an उसके लिए कोई impressive आदमी level हो of ना, commitment. तो उसे मैं कुछ कह सकूँ, थोड़ा गुस्सा कर A सकूँ। gift of this significance deserves to be भाई put वो on display, and I know उसको पता है just मैं the जैसा place. जैसे मैं थोड़ा Front गुस्से में कहूँ ना, and मैम मेरे को center सीनियर से in बात करिए, Fortress's सर आप showroom. समझ सकते हैं मेरी मजबूरी सर। सर मैंने कहा यार इसको क्या कहूँ Surely मैं, there's इसकी mechanical टोन parts इतनी Siegewin has collected. स्वीट हो जाए कि भाई जिसे कहते हो That ना sounds good to कि me. तुम बताओ, उसकी टोन जो है ना वो हॉट नाइफ है, तुम मैंट हो जाते हो भाई। That's बहुत what you were doing in Chowing अजीब सिचुएशन हो Village. जाती है। मजाक करते भाई, Indeed. जैसे तुमसे Of फ्लर्ट course, कर while रही I हो was बैठ there, के सामने। I also took the opportunity to taste the local spring water. The मैं सोची नहीं aftertaste is भाई, much pure. नहीं भी भाई, If you मैंने want to क्या कर सकता हूँ। experience the true flavor, you simply have to go to the source. मैं तो फोन ही Perhaps I काट should देते भाई, क्या organize करूँ। some time नहीं मैं off फोन to नहीं do काट the सकते same जब तक मैं ना elsewhere. वो काटूँ यहाँ से, या फिर मैं अब्यूज ना करूँ। उनको Then we ये are तो of the same है mind. उन पे, पर ये उठाते नहीं appears my हो भाई। वो desire is भाई justified. इतनी डम लड़की है, मैं उससे क्यों मैम If you मेरे say साथ ऐसी ऐसी so, दिक्कत आ रही है but सर, you मैं know क्या you कर don't सकती हूँ सर, आप have to समझ सकते हो justify a सर। vacation, उसकी मतलब जो right? टोन होगी ना, मैं You can just एक्ट नहीं कर सकता वो कैसी टोन है after कि all. मैंने कहते you're चलो भाई hardly छोड़ो, bereft of time. You can मैंने do कहा whatever छोड़ो you भाई, like. मुझे नहीं। You're quite आई मीन right. अगर पता I है suppose I मैंने suffer उसे not from देखा a हो After रियल लाइफ reading में a ऐसा few कभी नहीं articles करता, मैं about सिर्फ the बता US रहा हूँ holiday एज अ traditions, जोक the समझना, ठीक idea है। popped into अगर my मैंने head and made रियल itself लाइफ में quite से at देखा home. होता, वो देखने में Seeing थोड़ी as I was सी free आई of मीन responsibilities for अच्छी the होती है, वो morning, मुझे पता I होता कि हाँ decided to ये depart at once. बहुत अच्छी है। आई मीन तुम समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मैं कहता छोड़ो मैम, वाईफाई बंद रहने दो, मैं अपने इंटरनेट से तुमसे बात करूँगा। Refreshing. My मैं फोन में spontaneous आज ही outings 5G seem को to अनलिमिटेड, inspire as well. Take, for वो तो अच्छा है example, मेरे my पास foray into ceramics. 5G जियो में है ना कि At अनलिमिटेड first, है, वो यूज़ soil from करता the हूँ। ground is granular and unforgiving, but add the right amount of water, and it becomes कष्ट से crafted. मर, But now, कष्ट मर, I have कष्ट से participated मर, in their very कस्टमर है भाई making. हम उनके। This is also something I made today. हमारे तो नाम है ये, कष्ट से मर। That's भाई मैं illegal. बहुत डम फाउंड करता हूँ जब ऐसी सिचुएशन में फंसता हूँ। मेरा पता है मन क्या करता है, That was मेरा मन indeed करता है one उस of my राउटर को पकड़ूं inspirations. और उसे ना दीवार में इतना तेज स्मैश करूँ कि उसके टुकड़े हो जाएं, उसके बाद उसके ऊपर केरोसिन डाल के ना Really? बर्न कर दूँ। You like it? To tell you the truth, given your unexpected arrival, I find Well, myself very quite fucked unequipped situation to है, give you the ठीक है। welcome you deserve. Around such an important holiday, वॉइस बहुत this is प्यारी all थी I यार। can offer. अगर उस If you कस्टमर have केयर का it, that पर्सनल is. नंबर होता तो सेव करते, बट ये है कि वो कंपनी का नंबर था 101 मतलब कुछ था 1106464 ऐसा कुछ नंबर है। That is precisely why it would do me such a great honor if you accepted. मैं तो कहना चाहता था मैडम आप ये काम छोड़ो, सिंगर बन जाओ। फिर मेरे को याद है नहीं रिकॉर्ड होता है, उससे सीनियर से बात करने की ना वो भी नहीं हो पाया। भाई You ये are तो होता है most भाई, welcome. क्या कर सकते हैं। Happy Lantern Rite. इतनी डम सिचुएशन में फंस जाते हैं भाई हम। Approve a leave of absence request for myself. That sounds like it could easily lead to a vicious cycle of self-interest. Does in part originate from a sense of responsibility भाई toward my कुछ करना duties. पड़ेगा यार, मेरे को But ऑपरेटर it चेंज is करना also पड़ेगा। due देखो to a मेरी lack of स्पीड desire कम दिखा to रही है इसके engage अंदर। in the human world. But now I see that the human world is indeed full of many interesting places to discover.
अच्छा ये छोड़ो यार मेरे को, ये स्टैचू है क्या? इस स्टैचू की बात करोगे तुम? ये स्टैचू महंगा है, एक ये महंगा है, एक ये और ये महंगा है। आई मीन ये तो किसी सी बीस्ट जैसा कुछ है। Now, this is what I call a moment of solitude. कोई नहीं, सहनेंगे थोड़ा सा भाई, आवाज सुनने को मिलेगा ना, सहनेंगे। मेमोरीज पानी में कूदने जाता है स्किंग यूज करके, वो तो मैं जब देखा नीचे तो मेरे को समझ आया नहीं फोड़ना नहीं है, ऑलमोस्ट जंप किया था मैंने उसके अंदर। ओके मुझे वहां जाना है। यार नो फिश अकाउंट में ना बहुत टाइम लगता है कुछ भी करने में। आई मीन जब भी कोई न्यू अकाउंट बनाओ ना तो बहुत अजीब लगता है। मैं से स्पीड रन कर नहीं सकता ऑफलाइन, और ऑनलाइन सारी चीजें हो नहीं पाती हैं। असुरा इस टाइम में, अच्छा वही, हाँ ये स्टैचू है। अरे यार ये तो फाउंटेन है ना, हम यहाँ तो तैर ही सकते हैं, मैं भूल गया था। भी है ये फिश है नीचे, ये फिश का आइकॉन मुझे फर्स्ट टाइम दिखा है। ओ ये इन्होंने इसको भी माइक में मंगा दी क्या? नाइस, ये अच्छा है। डैम बॉय, फाउंटेन में तो बहुत भाई मेरे को खुद ये मन करता है, बट ये है कि ऑपरेटर भाई, ऑपरेटर पता है या तो नहीं, थक गया भैया मैं कुछ, उससे खुद के दिक्कत आ गई भाई। किसी थोड़ा सा सहन रहते हैं भाई, ऊपर से इसी बहाने कस्टमर केयर पे स्वीट स्वीट वॉइस सुनने को मिल जाती है। ये जोक था, बाकी सारी चीजें सही है। ऊपर खून करने से यार फायदा नहीं है ना, उसे खून करने से उसकी जो हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन की खून चूसने की लेगेसी है वो कोई और यूज करेगा, फिर कोई और हैंडल करेगा उसका वो पूरा। भाई डम सिचुएशन में फंस जाता हूँ भाई मैं कभी कभी। अबे ओह शिट, पुंगिस केस हो जाएगा भाई, पुंगिस केस तो होगा ही होगा भाई। अब उनको अगर ये सुनने भी तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि तुम पुंगिस पूछे तुमने खून क्यों किया, मैं नेट नहीं चल रहा था। पुंगिस भी कहेगी यार, हम ये भी तो नहीं कह सकते ना पुंगिस कि तुम्हारे पास तो बीबी तुम उससे बात करोगे, हमारे पास एक यही है जिसमें थोड़ा टाइम पास होता है नेट चंगा के, वो एक और केस ठोक देंगे ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को बकवास करने के लिए। दूसरी बात सुनने में भी नहीं अच्छी लगा यार, क्यों मार दिया बे यार, नेट नहीं चलना था। ऊपर से दुनिया जज भी तो बहुत करती है। मेरे से मैं ना जब मैं बीजेएमआई खेलता था, कौन है यार, हॉकाई बोन प्लीज वेट। नमस्ते ब्रो, हाउ आर यू?
पता है मैं जब बीजीएमआई क्यों पबजी खेलता था ना, तो मेरा अकाउंट किसी की वजह से बैन हो गया, मेरा सबसे प्रीशियस अकाउंट। और मेरा मन ये कर रहा था कि भाई मेरे को मिल जाए, मैं उसको मर्डर करूँ। भाई तेरे एक इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं है। मैंने कहा क्यों, क्या तू एक गेम किंग किसी का मर्डर कर दे? मैंने कहा सारे तू डम है क्या? सारे गेम की बात नहीं होगी, गेम में तो आईडी नहीं बन जाएगी। मेरी जो मेमोरीज थी उसमें, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कहाँ जाएंगे? ओ पाजी कैसे हो भाई? मस्त पाजी, तुसी दसो भाई किदा फिर? चंगे से भाई। वो बंदा पता है मुझे जज कर रहा कि भाई तू एक गेम की किसी का मर्डर करने की बात कर रहा है। मैंने कहा भाई डम, मतलब मैंने डम नहीं, अब्यूज किया था उसको बहुत गंदे मैं सीरियस नहीं बता। देखेंगे एक आईडी है, आईडी तो मैं अभी नया बनाऊंगा, बट मेरे जो फ्रेंड्स हैं, जो मेरी मेमोरीज है, वो थोड़ा ना आएंगी। 2018 के नहीं 18 के एंड से मैंने जो गेम खेला है सीजन 2 से, नहीं एंड नहीं यार, मिडल में। क्या भाई फिर भी मैंने कहा भाई तू मत बात कर, तू जा। अजीब अजीब बंदे भाई। भाई कभी कभी तो मन करता है सेक्रीफाइस कर दो किसी, कभी अपने आप को, किसी कोई रिचुअल हो जिससे फैमिली को थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए। मैं पंजाबी नहीं हूँ, कोई बात नहीं भाई। कभी कभी मन करता है ना कि अगर कोई फैमिली के लिए कोई एडवांटेज वाला काम हो ना, उसमें रिचुअल हो कोई, या कोई अपने आप को सेक्रीफाइस करने का मौका मिले, सेक्रीफाइस कर दो भाई। परेशान हो जाता होगा मन, आई मीन मज़ा नहीं आ रहा ज़िंदगी में, सीरियस नहीं होगा तो वाइब नहीं आ रही कि हाँ तुम जी रहे हो, ऐसे कि घिस रहे हैं बस। हाँ खींचते हो भाई ज़िंदगी को। तो कहाँ से हो भाई तुम? पंजाबी ने वो तो कहाँ से हो तुम? आई मीन किस जगह से हो, कैसे हो भाई? परेशान होके हैं जिंदगी से भाई। Poke boom for bro, how are you? I'm doing good bro. What about you? भाई मज़ा नहीं आया ज़िंदगी जीने में ना, मज़ा नहीं आया, सीरियस नहीं बोलूँगा। ये डिप्रेस साउंड करेगा बट मैं डिप्रेस नहीं हूँ, बट ये सिचुएशन ऐसी है कि मेरे को नहीं मज़ा आया भाई। पता है एक रियलिटी है जो मैंने लाइफ में सीख लिया, ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि इस लाइफ ने मुझे सिखा दिया कि भाई डोंट मेक टू मच फ्रेंड्स। मेरे पास स्टेमिना फूड ही नहीं है यार। अच्छा ये दूसरी आईडी है ना मेरी। मैंने एक टाइम पे इतने फ्रेंड्स बना लिए थे कि अब उनके ना होने पे मुझे एम्प्टीनेस महसूस होता है। वेयर आर यू ट्राइंग टू? भाई मेरे को स्टैचू ऑफ 7 तक जाना है। महाराष्ट्र ओके। नहीं मराठी नहीं आती मुझे। अबे नेट, वो नहीं 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 सीट। मैं अभी वो करने जा रहा था जो कि मिस्टेक होती है। अब उधर का वैसे इसका स्ट्रेट रास्ता भी कोई ना कोई होगा, बट मैं मैप में वो करने नहीं चाहता माइक गाने का।
ओके, अब ये 2 स्टैचू बचे हैं। एक सेकंड, ये हुआ क्यों नहीं? अच्छा मैं वो एनिमेशन में हो गया। मैं 50-50 आ गया नाइडा पे यार। किसी को कोई, क्योंकि मेरे पास एक भी क्वेस्ट नहीं है मेन आईडी में, बस एक क्लाउड गेटेने की स्टोरी क्वेस्ट है, बाकी कोई कुछ नहीं है। तो अगर किसी को कोई वे पता हो जिससे मैं आएंगे नाहिडा निकल जाए तो थोड़ा इजी हो जाए मेरे लिए। ये 2 बचे हैं बस। फिर एनिमेशन होने क्या? सब टाइम पोर्ट एक्टिवेट करना चाहिए। एक्चुअली मुझे ना वो करना है, नेवर 28 करना है ताकि मैं न्यूवे का आइकॉन क्वेस्ट कंटिन्यू कर पाऊँ और कंडेंस बनाने का ऑप्शन आ जाए। भाई ये 20 एजेंट्स वाला सिस्टम बहुत बेकार लगता है मुझे। एक्चुअली मैं ना मेरी मेन आईडी में बचा नहीं है कुछ, इस वजह से मैं ये न्यू आईडी बनाया ताकि थोड़ा सा चैलेंजिंग हो, थोड़ा सा टफ हो, जो कि ये है टफ पर उतना भी नहीं। एक और स्टैचू बचा है जो कि हम बाद में कर पाएंगे। वो 1-2 नॉर्मल बॉस में हो, इसमें तो नफंग अपनी होगा वो पे। ये इसका आज होगा क्या वेडनेसडे? ओ सो यू हैव नो ब्रो, इट्स ओके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हें कि मैं वो लूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये मैं अनलॉक क्यों करूँ। मैं उससे रीजनिंग बताओ। मैं मेरा बेसिक रीज़न है आइकॉन क्वेस्ट कंप्लीट करना, ताकि थोड़ा सा फास्ट में अपना लेवल अप कर पाऊँ और इजी हो मेरे लिए थोड़ा सा। I mean, मैं इसको मार सकता हूँ बॉसेस को रेजेंस उड़ाने के लिए, ताकि मेरे को आगे जाके शांगिन तो अपग्रेड करनी है। बुंगो AR-50 45 जस्ट हिट बॉसेस। हाँ मुझे वैसे भी करना पड़ेगा, 50 से पहले मैं वो भी नहीं कर सकता ना। नोएम होती तो थोड़ा इजी पड़ जाता भाई। और मुझे हाइडोट गन बना के क्या आना चाहिए था, उसकी वाटर गन मारता इस पे।
सिंचो का कूलडाउन बहुत ज्यादा होता है ना उसके स्किन का, यही तो दिक्कत है। I'll keep an eye on you. I'll take care of it. सिंचो कूलडाउन बहुत देर तक रखता है भाई। Barbara, go. भाई तुम्हारा AI कितना हो? Let the show begin. Yeah. Let me leave you a berth. Freeze! Come a little closer. You're in for a little shock. Come a little closer. बच गया मैं, अब फिर से बच गया मैं। नाइस। Body and mind. Cool it! नीचे 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 मुंडी कर भाई। Dodge this! Cool it! This moment will be frozen in time. Come a little closer. You're in for a little shock. ओए यार सिंचो का पता स्किन इतना ज्यादा Dodge this! Don't push your लेट luck. आता है। No, my sword. I'll protect us. Rain outlines your fate. Witness the power of Gugwa. Freeze! भाई तुम्हारे पास प्रीमोस था, मेरे पास प्रीमोस नहीं है। मेरी मेन आईडी ये दिक्कत है ना, मेन आईडी में मेरे पास प्रीमोस नहीं है। और मैं प्रीमोस ना होने की वजह से थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, वरना मैं मेन आईडी में ही होता है। बट ये कि प्रीमोस नहीं है ना, तो थोड़ा सा डिप्रेस्ड कर दिया उस आईडी ने मुझे। मैंने कहा नहीं यार, अभी कहेंगे बंद करो इस आईडी को, बाद में करेंगे। नहीं पोकसोंग पोक वुंफ भाई नहीं, मतलब मेरा एक फ्रेंड था पोकेमॉन गो में जो जिसका नाम पोकसोंग था, मुझे अभी वो याद आ गया। आई मीन मेरा स्टार्टिंग में सिर्फ रोबोट गेमिंग था, उसके बाद मैंने ये स्विच किया था। आई मीन मैं फिर से चेंज करने वाला हूँ तो। Outrider Amber reporting. नो वरी, मैं एक बार फाइनल ही चेंज करना चाहता हूँ। फाइनल उसके बाद मैं नहीं चेंज करने वाला। ओ एक सेकंड, मैंने ये चेंज नहीं किया कैरेक्टर। भाई मैं इतनी भाई ये पता है जेंशिन वांगो की ना, ये पता नहीं मैंने टीपी किया भाई अभी जस्ट। भाई यार कहाँ हूँ मैंने जस्ट अभी टीपी किया, उसके बाद भी तुम ये शो करोगे कि मैं ऑनलाइन हूँ। मतलब एनिमी मेरा पास में, ये कैसे हो सकता है? अरे यार मैंने हाइपर बूम टीम को क्यों छेड़ दिया? इसी में करना चाहिए था मुझे। Is it time for a magic show? Outrider Amber reporting. Just sharpen my spear. Boba, get them!
Ship on up! You're toast! No one escapes my sight! Nice and spicy! You're in for a little shock. You're in for a little shock. Booba, get them! Over here! Surprise! Surrender and I'll be gentle. Come a little close. Go, go, Baron Butt! Out of the frying pan, into the fire! No escape! Booba, get them! Be amazed! Eat this! इतने स्ट्रीम में सेव करने के बाद आई विल टेक 5 मिनट्स. हाँ, इट विल टेक 5 मिनट्स. ओके, ये तो है भाई. पता है कितने गेम और सेव करूँगा. एक तुम्हारा फेवरेट कैरेक्टर मिल जाए ना तो खुशी होती है, अगर नहीं मिला तो दुख होता है. एनिमो चलो ये अच्छा है, ये बेकार है, ये मैं दे दूँगा. नेट को क्रिएट तो चाहिए मुझे. भाई बहुत सैड महसूस होता है जब तुमने, पता है मैंने नाहिडा पे पुंग किया पूरा अपनी सारे पीमोज वेस्ट करके, और उन्होंने क्या किया नाहिडा ने मुझको फोइना क्या मोना दे दी, वो भी C1 हो गई. C1 मोना. सैड तो है भाई, जिंदगी कितनी सैड हो जाती है कभी कभी. For justice. I'll take care of it. This will be interesting. What's the hurry? क्यों भाई, क्यों करते ऐसा, दे देते भाई. मैं 250-50 लगातार जीत गया, जो कि मुझे जीतना भी नहीं था. 10-15 की पीटी पे निकल गया, और जो मुझे चाहिए होता है वो नहीं निकलता कभी. आएंगी बाकी सारी चीज़ें आएंगी आ जाती है, बस वो नहीं आता जो मुझे चाहिए. गेम में डम है भाई. भाई You're in for a little shock. भाई मैं हाइडो शॉट क्यों नहीं जा रही इस पे? हो My, you're in for a little shock. Come a little closer. Cool it! Let's dance. Oh, so sorry. Dodge this! चेंज. Sword. भाई बाबा ज्यादा डैमेज देगी भाई. सिंचो से ज्यादा डैमेज देगी मेरी बाबा. Freeze! बिना सैक्रिफिशिंग के सिंचो बहुत दिक्कत है. Rain outlines your fate. Cool it! You're in for a little shock. Dodge this! एक मिनट. अचीवमेंट करो. Freeze! No, my sword. Ring cutter. Dodge this!
Frostbite. Come a little closer. ओ भाई अरे यार एक तो इस पे कंफ्यूज हो गया मैं फिर से Just sharpen my spear. At the ready. Is it time for a magic show? मैजिक दिखा दे मैंने टास्क तू वो नहीं मैं मरता बचा Over here. Nice and spicy. Yep. Hup. Yep. Huh? Surprise! Come a little closer. You're in for a little shock. Get him! Out of the frying pan, into the fire! Nice and spicy! Trip on them! Out of the frying pan, into the fire! Booba, get them! My. I'll race you there! Go, go, Baron Bunny! Nice and spicy! Surprise! Cue the spotlight! Let it rain! Let's spark things. You're toast! Booba, get them! Emerson, burn! This will be interesting. For justice. I can't wait any longer!
Rain outlines your fate. Over here! Adventure time! Bow before me, worm! Sure! Shine down! And you shall fall! Remove all obstacles. My endless cycle begins! One with nature. Shower me with praise!
Solidify! Into the wind. Illusion shattered. Riddance, cruel world. Solidify! One with nature. Into the wind. Your new god awakens! Again. Now, your eyes can open. Solidify! Time to go. Let it be known that divinity is mine! Sure! Solidify! Be more human! Adventure time. Stay right! My endless cycle begins! Into the wind. This is getting Insignificant past! I am the all-knowing God! Oblivion! Out of the way! Adventure time. Tremble! Gather! Filth! Time to go. Reality is pain! Gather! Burn to oblivion! Good riddance, cruel world. Gather. Let's
Light it up! I'm going in! As one with wind and cloud, one with nature. Get out of here! Everybody stand back! Fallen leaves, adorn my night! Let my name echo in... This is order. Stabilize. Solidify. Reality is pain. You're trembling. Is it the cold or just the cowardice? Yeah. Yeah. Things are about to get dicey. Gotcha. Our bond is Into the frozen void. The process of elimination. Gather. Flicker. Stabilize. Game's up. Fun's over. Order guide you. Solidify.
Just call me a witch! Lightning terrified! Dissipate! Never. It is time, Morax. We settle this now! Gather! Crumble! Stabilize! Stand with me! Gather! There is no atonement for 1,000-year pain! Busted. Today, you Solidify! This is order! Dissipate! Stabilize! The enraged Earth will not absolve you! But Process of elimination.